Alright, boys. So, today is the day that separates the men from the boys, the strong from the weak. It's like that. So, we'll be hitting legs today, and I'll just take you through what a normal leg day looks like. Okay, so first we start off with some leg curls. तो पहले वार्म अप सेट लेते हैं. इसमें मतलब जितना भी मैक्स एफर्ट के साथ जा सकते हैं तो करेंगे. There's a lot of background noise. The legs just feel better. So I like to get my leg curls out of the way first. This is gonna be my working set, my final set. Max full stack. Come on, man. Drop set. Now in the drop set, I like to lean ahead because that stretches your hamstrings even more. And that's even more brutal. And that's it. We're done with hamstrings. Squats करेंगे अभी. Now in squats, I don't go as heavy as I used to. I like doing dead stop reps. मतलब नीचे बैठ के I hold for like a good second or so, and then I basically perform the reps. मतलब this is just squats, but it just sucks more. And that's what leg days are about. I'll try not to breathe too hard and heavy on the mic, but no promises. Come on, boy, let's go. Easy. Easy. Come on. Come on, come on. एक और boy. So last step में it's just like a controlled eccentric. And that's squats. Done. Okay, so after squats, arguably the most hated exercise. I'm not a big fan of it. Bulgarian split squats, which is what we'll be doing a bit. Chalo bhai.
I'll try 35, but 30 का भी सेट रिकॉर्ड कर लेते हैं इन केस अगर 30 में ज़्यादा बैंड बच गई तो फिर this is the set I'll put. If not, I'll take 35. You know what? Obviously, we're gonna go 35, dude. Obviously. I'm not the biggest fan of this, but leg day पे एक unilateral exercise होनी चाहिए. It's a must. Lunges लो, step ups लो, split squat लो, या Bulgarian split squat लो. एक single leg पे balance करने वाली exercise is a must because that will develop all your stabilizing muscles. And प्रॉब्लम ये है इसीलिए जैसे लोग लेग प्रेस इतना हैवी उठा लेते हैं बट उतने उसका आधा स्क्वाट भी नहीं हो पाता है. Why? Stabilizers. So you want strong stabilizers. You want small बोल रहा हूँ. Those stabilizers are small muscle groups in your hips. Fuck. So Bulgarian split squat targets those. Anyway, let's get this party started. I have gone 40 once in my life. 35 भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं उठाया है, बट अभी देखते हैं कैसा जाता है. चलो भाई, easy. This is the worst. चलो. यार बीटी हो गई. आई जस्ट चेक माई बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट वाला सेट. उसमें मेरा आधा सर तो चॉप्ड है, बट मैं फिर भी वो वीडियो डालूंगा. दैट वाज अ डिफिकल्ट सेट डूड. एनीवे, अप नेक्स्ट लेग प्रेस. दिस इज प्रॉब्ली गोना बी माय फाइनल सेट. 200 kgs. मुझे ये वाला लेग प्रेस इसलिए अच्छा लगता है कि उसमें ना I like that. Oh, I'm tired, dude. Chalo, let's go. At least
10. इसमें कंट्रोलिंग द नेगेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राई करो जितना रेंज ला सकते, जितना नीचे ला सकते उतना अच्छा है. चलो लेट्स गो लाइक दिस. तो दब जा भी. नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ. चलो दो और. Come on, Theo. I can go heavier. I think I'll go heavier. 20 order वाला. 240. In all honesty, I don't know. I don't think ज़्यादा reps जाएंगे, but who cares, brother? Who cares? Who cares? Today. Smash. अरे भगवान उठा लो यार. स्टार्टिंग में कितना डायलॉग बाजी कर रहा था. Today is the day that separates the weak from the strong, the boys from the men. मम्मी नहीं नहीं चलो let's go boy. Let's go. Two more. Drop set. Let's go. पांच और. अच्छा जी, अभी लेग एक्सटेंशंस. बट लेग एक्सटेंशन में थोड़ा सा ट्विस्ट है. हम बैठ के लेग एक्सटेंशन नहीं करेंगे, लेट के करेंगे. सो द एडवांटेज ऑफ दैट इज it stretches the insertion point of your quadricep. When you lie down like this, see this part gets stretched, and stretched muscle को जब आप contract करते हो, obviously it's more difficult, but it is much better for hypertrophy because we want to focus on that stretched contraction. I know it's contradictory, but it'll make sense. कभी करना तब पता लगेगा.
ओके पिछला सेट बहुत ही हल्का था, मतलब fairly easy. So I've increased the weight a bit and I'll really try pushing myself in this one. अभी इसमें क्या है, what I do is once I'm done with the stretch part, जब मैं exhaust हो जाता हूँ तो फिर मैं बैठ के I do more reps because contracted state पे, मतलब relatively contracted state पे मसल को contract करना is easier. स्ट्रेच पोजीशन पे मुश्किल होता है, तो पहले हम स्ट्रेच पोजीशन में बैंड बजाएंगे मसल की, फिर कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में बैंड बजाएंगे मसल की. बैंड बजना है इधर वे. चलो लेट्स गो. कंट्रोल द नेगेटिव. हो गया. 10 लेग्स काफ करेंगे ये वाली. अभी the number one reason why most guys out there have small calves is because सबसे पहले तो आप calf एकदम लास्ट में करते हो, so you don't prioritize your calf. And I don't know why, for some reason people think कि calf में light weight लेना चाहिए, high reps करो. heavy weight high reps, उसी से मसल बनता है और कोई चीज़ से मसल नहीं बनता है. There's this common question, no? Oh, what is better, light weight high reps or heavy weight low reps? And the answer is heavy weight heavy reps. That's the only way. Watch. अभी calf raise में भी you need to make sure, भाई बहुत नीचे. अभी calf raise में you need to make sure that you're stretching पूरा नीचे. लोग क्या करते हैं, बस ये वाले पार्ट पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. पूरा नीचे जाओ, stretch the muscle and then you go up. Okay? We'll go heavier. Easy था, और जा सकते हैं. अब a lot of people would be like, how much weight is that? To be honest, I don't know. but एक बार देखते ज़्यादा होगा. 25, 100, 140 plus 30. Ah, 170. And obviously my own weight as well. But yeah, so this is probably going to be my top set. जितने ज़्यादा reps push कर सकते हैं push करेंगे. और लास्ट में नीचे stretched position पे will hold, not ऊपर, नीचे stretched position. Let's go. Done. अब बस एक लास्ट एक्सरसाइज है, and I don't look forward to it because you'll see why. But it's good for your knees. I mean, if your knees can do it, it's a great exercise for your knees.
Why do I do this to myself? All right, and with that we come to an end to leg day. हो गया. इसमें कोई पोजिंग वोजिंग तो कुछ करना है नहीं क्योंकि लेग्स पंप के साथ कुछ खास दिखते हैं नहीं. सो नो पोजिंग, इधर तक ही रखते हैं. I'm done, dude. I don't have a lot of blood going in my brain, so I'll just call it here.